Bismillahirrahmanirrahim. Hello everyone, this is Syed Malik, and in this video we are going to solve 17th problem of cash book from Intermediate First Year Accountancy. Now let us begin with our problem. Prepare triple column cash book. 1st February 2019. Cash balance, bank balance. So immediately after reading this, we'll draw the format of cash book, which consists of two sides. On the debit side, you can observe 6 columns: date, receipts, LF, discount allowed, cash and bank. Similarly, on the credit side, date, payments, LF, discount received, cash and bank. So immediately after reading this, we need to identify the balances. Cash balance is the balance of cash, bank balance is the balance at bank. These both are our assets. और assets का हमेशा debit balance रहता. So directly we'll move towards the debit side and we'll write the date. The date is 1st February 2019. And in the receipt column, we will write to balance B/D. That means brought down. Let us see what is the amount of cash. That is 12,000 and the amount of bank is 8,000. So in the cash column, we will write 12,000 and in the bank column, we will write 8,000. Let us move towards the next transaction. That is on 3rd Feb. Issued a check to Rama 3,950. Discount 50. Check deposited with bank. So what it is telling? It is telling that we have issued check to Rama. चेक आप इशू करें तो हमारे बैंक से पैसे जाते, पैसे गए तो क्रेडिट साइड लिखना है, पेमेंट साइड. So the date is 3rd February 2019 and here we need to write by Rama. किसको दिया आप चेक? रामा को. So by Rama's account, what is the amount? The amount is 3,950. The discount is 50. So first we'll write the amount of discount, that is 50, and we need to enter in bank column. क्योंकि वो इशू करें ना, तो बैंक में से पैसे जाते हैं हमारे. 3,950 is the amount. Now let us move towards the next transaction. Before that, we'll adjust the date column a little bit. Yes. Next transaction is on 6th February. Cash sales 4,500. Cash sales. तो हमारे बिजनेस में पैसे आए. आप सेल करें ऑन द बेसिस ऑफ कैश. सो जब कभी हमारे बिजनेस में पैसे आएंगे, विल रिकॉर्ड द ट्रांजैक्शन ऑन द रिसिप्ट साइड. द डेट इज 6th February 2019 एंड इन द रिसिप्ट कॉलम वी हैव टू राइट टू, क्या करें आप? सेल करें. सेल्स अकाउंट. व्हाट इज द अमाउंट? द अमाउंट इज 4,500. Then after that, the next transaction is cash deposited into bank. 10th February. क्या हुआ? कैश बॉक्स ओपन करे आप, पैसे लिए, बैंक को जाके डिपॉजिट कर दिए. सो व्हेनेवर देयर इज अ डायरेक्ट कनेक्शन बिटवीन कैश बॉक्स एंड बैंक, कॉन्ट्रा एंट्री एग्जिस्ट. तो कॉन्ट्रा एंट्री होते कि इमीडिएटली हमको जर्नल एंट्री पास करना है. व्हाट इज द जर्नल एंट्री ऑफ कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक? बैंक अकाउंट डेटार टू कैश अकाउंट. ऑब्जर्व दिस जर्नल एंट्री वेरी केयरफुली. ये जर्नल एंट्री में टू किसके साथ है? कैश अकाउंट. सो वी हैव टू राइट to cash here, to cash, and by bank on the payment side, by bank account. What is the date of this transaction? The date of this transaction is 10th February 10/2/2019, and for identification we have to write C in the LF column. The date is 10th February 2019. We'll write C in the LF column. Now, what is the rule of contra entry? You need to enter the amount in the opposite column. Cash दिखा तो बैंक में enter करो, बैंक दिखा तो cash में. So, what is the amount? Amount is 2,500. इधर क्या दिख रहा है हमारे? Cash. So, we have to enter this transaction in the bank column. 2,500. इधर क्या दिखा हमारे? Bank. So, we need to enter the amount in the cash column. 2,500 is the amount. Now let us move towards the next transaction. That is on 18th Feb. Received cash from Mohan 2,800. Check 5,800. Discount 400. क्या हुआ? मोहन के पास से हम रिसीव करें क्या? कैश और चेक. ठीक है. और डिस्काउंट कितना हुआ? 400. जब कभी भी चेक रिसीव हुआ तो रुक जाना है. रुक के आगे जाके ट्रांजैक्शन में देखो
मोहन का चेक डिपॉजिट करे क्या? तो इधर कहीं पे भी लिखा हुआ नहीं है मोहन चेक डिपॉजिटेड, सो इट इज अंडरस्टूड दैट वी हैव डिपॉजिटेड चेक ऑन द सेम डेट, 18 के दिन चेक आप डिपॉजिट कर दिए। सो व्हाट वी हैव टू डू, पैसे हमारे बिजनेस में आए, तो जब भी पैसे आएंगे वी हैव टू रिकॉर्ड इट ऑन द डेबिट साइड। व्हाट इज द डेट? द डेट इज 18th February 2019 and in the receipt column ये पैसे चेक दिए कौन हमको? मोहन। सो विल राइट टू मोहन्स अकाउंट। नाउ लेट अस सी डिस्काउंट कितना हुआ? 400, कैश कितना मिला? 2900, सॉरी 2800, कैश इज 2800 and the check is 5800, डन। 5800 चेक है, डिस्काउंट 400 है, कैश 2800, डन। देन लेट अस मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट ट्रांजैक्शन दैट इज परचेजेस रुपीज 3400। परचेजेस मतलब हम पैसे दिए और गुड्स खरीदे, सो वी हैव टू रिकॉर्ड दिस ट्रांजैक्शन ऑन द क्रेडिट साइड, पेमेंट साइड हम रिकॉर्ड करेंगे। व्हाट इज द डेट? द डेट इज 20, सो इन द पेमेंट साइड विल राइट 20 February 2019 एंड हियर विल राइट बाय, क्या करें आप? परचेजेस करें, परचेजेस अकाउंट। व्हाट इज द अमाउंट? द अमाउंट इज 3400, so we will write 3400 here, done. Now let us move towards the next transaction that is on 23rd मोहन्स चेक डिसऑनर। मोहन के पास से जो हमको चेक मिला था वो डिसऑनर हो गया। डिसऑनर हुआ मतलब मोहन के अकाउंट में बैलेंस ही नहीं है 5800 का। अगर मोहन के अकाउंट में 5800 बैलेंस रहता था तो उसके अकाउंट में से डिडक्ट होकर हमारे अकाउंट में आते थे, बट मोहन इज नॉट हैविंग द बैलेंस ऑफ 5800, तो उसके अकाउंट में से कटिच नहीं होते पैसे और ना हमारे अकाउंट में आते। बट इन आवर कैश बुक वी हैव रिकॉर्डेड दैट वी हैव रिसीव्ड मनी, पैसे आगे बोल के लिखे हम 5800। तो अब हमको क्या करना है? ये ट्रांजैक्शन को कैंसिल करना है। आए पैसे नहीं आए तो पैसे आए बोल के लिखे हम, डेबिट साइड लिखे। अब इसको कैंसिल करना है तो क्रेडिट साइड लिखना पड़ता। फॉर कैंसिलिंग अ डेबिट ट्रांजैक्शन यू नीड टू राइट इट ऑन क्रेडिट। ठीक है, कैश बुक में पैसे आए तो हम डेबिट साइड लिखे थे मगर पैसे नहीं आए, चेक डिसऑनर हो गया, सो वी विल राइट, so to cancel this amount we need to write it on the credit side। ठीक है, what is the date? The date is 23rd February 2019 and in the payment column what we have to write? चेक डिसऑनर हो गया, वो चेक हम रख लेके बैठते क्या? नहीं, मोहन को दे देते वापस। सो हियर विल राइट मोहन बाय मोहन्स अकाउंट, मोहन्स अकाउंट। सो व्हाट इज द अमाउंट? किधर आए बोल के पैसे लिखे थे हम? बैंक अकाउंट में पैसे आए बोल के लिखे थे मगर आए पैसे नहीं आए, तो ये अमाउंट को हम कैंसिल कर रहे हैं। सो वी नीड टू राइट इन द बैंक कॉलम 5800, डन, एवरीथिंग इज डन। आई विल रिकॉल दिस। मोहन के पास से चेक आया, हम पैसे आए समझ के कैश बुक में रिसिप्ट साइड लिखे, बट एक्चुअली में हमारे अकाउंट में वो पैसे क्रेडिट नहीं हुए, चेक डिसऑनर हो गया, कई को मोहन के अकाउंट में पैसे नहीं थे। तो हमको ये एंट्री को कैंसिल करना है, चेक आए बोल के हम रिसिप्ट साइड लिखे थे, सो कैंसिल करने के लिए हमको पेमेंट साइड लिखना पड़ता। सो व्हाट वी आर राइटिंग बाय मोहन्स अकाउंट एंड इन द बैंक कॉलम वी आर राइटिंग 5800। नाउ लेट अस मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट ट्रांजैक्शन दैट इज ऑन 24th Feb, रेंट पेड बाय चेक। रेंट पेड बोले तो पैसे हमारे बिजनेस में से जाते गए, तो विल रिकॉर्ड इट ऑन पेमेंट साइड 24th February 2019 एंड हियर विल राइट बाय, क्या पे करें आप? रेंट पे करें, सो आर रेंट अकाउंट। कैसा पे करें? रेंट कैश दिए नहीं, वी हैव पेड बाय चेक, सो 1000 वी हैव टू राइट इन बैंक कॉलम, डन। देन आफ्टर दैट लास्ट ट्रांजैक्शन इज ड्रू, मतलब निकाले क्या? पैसे फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज, सो वी हैव विड्रॉन कैश फॉर ऑफिस यूज। पैसे विड्रॉ करें आप और कैश बॉक्स में लेके आके रख डाले। सो वेन एवर देर इज अ डायरेक्ट कनेक्शन बिटवीन कैश बॉक्स एंड बैंक, कॉन्ट्रा एंट्री एग्जिस्ट। कॉन्ट्रा एंट्री होती कि इमीडिएटली वी नीड टू पास दी जर्नल एंट्री। व्हाट इज द जर्नल एंट्री ऑफ कैश ड्रॉन? विथड्रॉ करें ना आप, सो कैश अकाउंट डेटा आर टू बैंक अकाउंट। अब ये जर्नल एंट्री में टू के साथ क्या है? बैंक अकाउंट है, सो व्हाट वी हैव टू राइट? टू बैंक
account, and here we will write by cash account to bank by cash as per our journal entry हम लिख डालें. So what is the date of this transaction? 28th. Amount is 1600. First we will write date 28th February 2019, and for identification in LF column we need to write C. 28 February 2019, and here also for identification in the LF column we will write C. So what is the rule of contra entry? बैंक दिखा तो अमाउंट कैश में एंटर करो. So what is the amount? 1600 is the amount. इधर बैंक है, अमाउंट कैश में एंटर करना है 1600. इधर कैश है, अमाउंट बैंक में एंटर करना है 1600. Now we have completed all the transactions. अब हमको क्या करना है? टोटल करना है. We will begin with discount section. Discount allowed is 400 and discount received is 50. Then we will do the total of the cash column debit side. अब डेबिट साइड का टोटल कितना होता है? 12,000 प्लस 4,500 प्लस 2,800 प्लस 1,600. सो द टोटल विल बी 20,900. अब ये टोटल ज़्यादा है, जो ज़्यादा रहता हम दोनों तरफ लिखते, क्रेडिट साइड भी सेम लिख देते हैं हम 20,900. एंड फ्रॉम दिस 20,900 वी नीड टू सबट्रैक्ट 2,500 and 3,400. So the answer will be, the balance will be 15,000. ये क्या है? ये balance of cash है. Now we'll find out the balance at bank. So for that we'll do the total of debit side 8,000 plus 2,500 plus 5,800. So that is 16,300. 16,300. And this is higher amount. तो जो ज़्यादा रहता वो हम दोनों तरफ लिख देते 16,300. And from this 16,300 we need to subtract all the amounts of credit. Minus 3,950 minus 5,800 minus 1,000 minus 1,600. So the answer is, the balance at bank is 3,950. So what will be the date of this balance? The date of last transaction, that is 28 February 2019. And in the payment column we need to write by balance carry down C/D. बैलेंस कैरी डाउन लिखे बाद ये हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी है बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखना. सो दिस बैलेंस विल जंप एंड अपीयर ऑन द डेबिट साइड. डेट बदल जाती है इसकी. द डेट विल बी द फर्स्ट डे ऑफ द नेक्स्ट मंथ, 1st March 2019. 1st March 2019. Here we have to write to balance brought down B/D. So what is the balance of cash? The balance of cash is 15,000 and the balance of bank is 3,950. From this we have completed problem number 17. The next problem we will begin with problem number 18. Till then, stay connected with Ranks, the Institute of Commerce. Thank you.